तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होगा अबाउट लिजर्ड ब्रेन मेंटालिटी। बेसिकली हमारे ब्रेन में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, द लोअर पार्ट ऑल्सो नोन एज एमिगडाला एंड द आउटर ब्रेन नोन एज पीएफसी और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इनमें बेसिकली ब्रेन तीन पार्ट से मिलकर बनता है, विच इज मेड्यूला, देन सेरिबेलम विच इज द मिडल लेयर, एंड आउटर लेयर इज ऑल्सो नोन एज द सेरिब्रम। सबसे इनर लेयर मेड्यूला होती है, जो कि मैंने बताया। तो अभी मैं बात कर रहा था इनके दो पार्ट्स के बारे में, विच इज एमिगडाला एंड पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। एमिगडाला को आप एक तरीके से एक लिविंग साइड ऑफ ब्रेन भी कह सकते हो, और पीएफसी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होती है ब्रेन की वो साइड जो आपको लाइफ में अच्छे अच्छे गोल्स, अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते हो, जो कि आप बेसिकली मेहनत करके, प्रैक्टिकल वर्क करके बनते हो, उसके बारे में आपको मोटिवेट करते हो। मोटिवेट तो खैर, मोटिवेट क्या है? मोटिवेट अगर आप उसको छोटे छोटे वर्ड्स में अगर आप तोड़ के देखो तो वो बेसिकली पर डे के हिसाब से डिसिप्लिन है। तो जो बंदा डिसिप्लिन होगा वो मोटिवेट अपने आप ही रहेगा। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा, डिसिप्लिन रहना बहुत हद तक आसान है अगर आप अपनी एडिक्शंस के और अपने डेली रूटीन के आप खुद के कंट्रोल में हो तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एमिगडाला पूरा ही बेकार है, बट एमिगडाला प्रमोट्स रेप्टाइल ब्रेन मेंटालिटी। वो उस तरीके की मेंटालिटी को प्रमोट करता है, बेसिकली जिस तरीके से एनिमल्स रहते हैं। आप किसी क्रोकोडाइल को देख लो, या आप किसी स्नेक को देख लो, या आप वैसे भी किसी एनिमल को देख लो, तो उनकी लाइफ के मेन एम या मेन जो स्टिमुलेशन होते हैं वो इसी के बेसिस पे होते हैं, विच इज़ मेटिंग, रिप्रोडक्शन, ईटिंग और ड्रिंकिंग वाटर और हंटिंग, विच इज़ बेसिकली ईटिंग ओनली। बट ह्यूमन लाइफ इज़, आई वुड से, it is above all these things. It is above all these natural things. It is eating, breathing, exercising, meditating, and drinking water are just merely a part of it, but also more of other things, that is doing activities, working, studying, journaling, writing, reading, traveling, playing sports, gymming, etc., are a part of it. But when these bare minimum activities take control, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जैसे कि सिर्फ सोना ही ज़िंदगी है, या ईटिंग फूड ओनली, दीज बेसिकली आर प्रमोटेड बाय एमिगडाला, cause the main work of amygdala is to promote fear, anxiety, और the basic need of our human body। और उसको देखकर ही ना ह्यूमंस के अंदर एक रेप्टाइल ब्रेन मेंटालिटी आ जाती है कि डैड, लाइफ तो सिर्फ खाने के बारे में है, डैड फूड के अलावा ऊपर इस ज़िंदगी में, खाने के अलावा इस लाइफ के अंदर कुछ है ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता, बहुत कुछ होता है अगर हम अपने शेल से बाहर निकले तो ये रेप्टाइल ब्रेन मेंटालिटी हर किसी में आती है एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, बट ये टॉक्सिक भी हो सकती है और नॉर्मल अच्छी भी। वो ये भी डिपेंड करता है कि आप लाइफ के किस स्टेज पे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज पुअर and he is basically eating food, then this can also be a sign of positive gratitude for him, that he is working every day and he is able to feed his or her family and himself or herself also. So this is also basically a positive trait, but ये आपको overtake ना करे कि हमेशा कहने का मतलब रिजल्ट पे भी नहीं आई होनी चाहिए कि ये तो आएगा ही आएगा। आपको इनपुट, जो आपकी एनर्जी है, वो बेसिकली आप रीगेन करोगे बाय मेडिटेटिंग, बाय ईटिंग गुड एंड प्रोडक्टिव फूड्स जो कि आपको लंबे समय के लिए एनर्जी दे, और ऑल्सो बाय मेडिटेटिंग, एक्सरसाइजिंग वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। और बाकी आपको मेन काम, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना होता है, विच इज़ बेसिकली जो भी आप काम कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, उस पर आप फुली मोटिवेटेड रह के अगर अपना काम कर रहे हो। और these are the signals, or I can say the signs of a human mind which differentiates that from of the animal mindset. So the upper part of the brain, which is the prefrontal cortex,
distinguishes this part of brain from the animal part of brain, which is known as the amygdala. Basically, for most of the society living today, and I'm talking about human beings here, it is basically negative, and negative basically because we are consuming the amygdala part of brain with the help of synthetic material which is available, but not the natural environment, which is basically not eating natural foods but eating, junk food, which is basically giving us instant gratification of just mere 2 to 5 minutes. But on the other hand, if you are not going for instant gratification, and if you have patience and you are eating fuller and complex carbs and good food and good diet, and you are going to gym every day, then you will start seeing mere changes in your body, and you will reach your full productive stage after a similar time. But on the other hand, you can either damage your body by doing these nonsense things which are basically promoted by amygdala. And also it basically promotes laziness and inactiveness, and it also aims in the human mind that the main the goal of human life is basically eating, drinking, or basically, I would say, existing but not living. And I believe existing is the baseline of all the biotic components of life, which are basically plants and animals. But plants lack CNS, central nervous system, and animals lack PNS, which is the prefrontal cortex. They have major power of amygdala, which is basically needed for them, which is basically they are existing. Sharks, whales, elephants, tigers, they do not have any lifelong goals. They are only here to complete their roles जिनके लिए वो इस दुनिया में आए हैं, विच कुड बी एनीथिंग. जैसे शेर है, उसकी दिनचर्या क्या है कि उसने अपनी फैमिली को फीड कर दिया, हंट कर दिया, खाया, और रिप्रोड्यूस करे और अपनी तरीके के ऑफस्प्रिंग्स पैदा करिए, और फिर शेर का जंगल वो घूम गया. बट ह्यूमन बींग्स हैव गोल. वी वी we according to also Hinduism, we believe that human birth is not just mere existence, but it is the biggest result which is given to a soul. So in order to thrive in a human life, we should always listen to our outer brain, which is basically PFC, prefrontal cortex. और ज़्यादा से ज़्यादा एमिगडाला को हमें अवॉइड करना चाहिए. और एमिगडाला जो है तब तक के लिए सुनो विच इज़ बेसिकली इट इज़ गिविंग अस द राइट सिग्नल्स ऑफ फियर, एंजाइटी, और आई कैन से हैप्पीनेस, sadness. But that could also be ignored if uh, if on which situation or process it is being held. For example, when we mourn someone or during the loss of some family member or a relative, we feel very sad. But at the same time, after crying for about 1 month to 2 month, some people take weeks, some people recover faster, some people take years, but a voice inside our heart comes and reaches our mind and says to us that you know जो होना था वो हो गया है, अब लाइफ के अंदर आगे बढ़ो. और कहने का मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात से, आधी इंग्लिश आधी हिंदी मैं ज़रूर यूज़ कर रहा हूँ टू पोर माई हार्ट आउट. बेसिकली आई एम मेकिंग यू ऑल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एमिगडाला, व्हाट इज़ पीएफसी. तो पीएफसी अगर आप हो पीएफसी बेसिकली बुद्धि देने का काम करती है, और एमिगडाला बेसिकली हमारा मन है. तो पीएफसी की मदद से आप अपने सामने रखी चॉकलेट को या कोई पेस्ट्री भी, आप उसको भी इनकार कर सकते हो, आप उसको भी मना कर सकते हो कि ठीक है यार, मेरे को नहीं खानी तो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये मेरे को करनी ही नहीं है. मैं तो ये खा लूंगा. तो एक तो हुआ मैंने इसको खा लिया, लेकिन इसको खाने से मेरे को क्या मिला, इसने मुझे क्या दिया? नथिंग. नथिंग. एम्प्टी कैलोरीज, नो प्रोटीन,
बेसलेस कार्ब्स, बेसलेस फैट्स, जिन्होंने मेरे को फुलर नहीं फील कराया। और ऐसे ही डिपेंड करता है और भी बहुत चीज़ों के लिए, लाइक माइंडलेस स्क्रोलिंग जो आजकल हम इंटरनेट पे करते हैं। दे आर ऑल्सो गिविंग अस अ सेंस ऑफ फॉल्स डोपामीन and instant gratification without doing any kind of hard work. So, and the major thing which I also want to talk about here is that happiness do not comes from any experiences. Happiness do not comes from any uh, physical goods or commodities, goods, etc. Happiness is already pre-existing inside the human beings or all the biotic components. We do not want to seek happiness from any outer stimuli or material. Happiness is already pre existing inside us. So, stay happy, and if not, then find a reason to be happy, and do not rely on these kind of cheap material. And by these way, you will start to, control your reptile brain and focus more on the positive side of our brain, which is the prefrontal cortex, which develops our baseline thinking. And it also stops our overthinking is basically also done by amygdala, cause during overthinking a person is getting desired results in his mind only. He is not achieving them. He has not done any kind of productive exercise or process through which he is indulging in it. He has not done any kind of practical work. He has not put any kind of practical effort, but he is basically blah 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 in the theory of his mind and accomplishing details accordingly. मन की मनगढ़ंत कहानियों में ही इंसान रह जाते हैं ओवर थिंक करके, बट जो एक प्रैक्टिकल डिसीजन तक पहुंचना है, फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन वांट्स टू build muscle, then he is by overthinking he is just basically thinking positive or negative inside his mind only, कि ये होगा ये नहीं होगा, ये होगा ये होगा। उसने कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाया, वो तो अपने घर से बाहर तक नहीं निकला। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ओवर थिंकिंग ना करोगे, विच जो कि एमिगडेला का पार्ट था, अगर आप पीएफसी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम करोगे कि नहीं मेरा काम वेट लॉस करना और मैं इसको ट्राई करूँगा, आप घर से बाहर निकले, आपने करा और आप रिजल्ट से अटैच नहीं हो गए, आपने काम करा, तो इट विल गिव यू पॉजिटिव ग्रेटिफिकेशन, जंग जीतने टाइप की। आपने काम करा और आप करके आ गए, अब जो होना होगा वो हो जाएगा, एंड आई विल एक्सेप्ट, because there are two types of decisions: a decision based on the principality of discipline and a decision based on the principality of regret. And it is now up to you what you have to decide: discipline, a life based on discipline, or a life based on pre-described motivation, and then do not taking any action, and at last coming into conclusion with the regret. So now you have to decide basically. मैंने कट्स नहीं एडिट करे क्योंकि मैं वीडियो को जितना हो सके उतना रॉ रखना चाहता था और ये देखना चाहता था कि ऑडियंस का रिजल्ट कैसा आएगा, और बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड रिस्पॉन्स को हम जो भी ऑडियंस देगी उसको एक्सेप्ट करेंगे विद आर ग्रेसफुली विद आर हार्ट। सो थैंक यू सो मच, एंड बने रहिए, एंड आई विल बी कंसिस्टेंट, एंड नई वीडियोस डालने की कोशिश करता रहूँगा। बाय।